us and all our viewers, what will be the first response from those medical teams? What are they going to actually focus on? What are they likely to encounter? So let's get Dr. Bagai back, or any other person who's skilled enough to talk about the medical exigencies that one can expect. But you can see, viewers, a large number of people now coming out from there. They're carrying, obviously, material that was used in the rescue operations. Here you can see the first responders going in, the NDRF teams going in. And there, viewers, you are also seeing more and more personnel arriving at this site and moving into the tunnel. So we have a reaction coming in. Let's listen in. सर हम लोग ने देखा कि स्ट्रेचर लेके जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या वो स्ट्रेचर किस लिए लेके जा रहे हैं? उनको लेके आने के लिए स्ट्रेचर ला रहे हैं। हाँ। कि वो चल के ना आए तो स्ट्रेचर पे लेट के आए वो। अच्छा, तो कितने लोग गए हैं एनडीआरएफ के? वो 4-5 आदमी गए, बाकी तो एनडीआरएफ की पूरी टीम है वहाँ पे। 20-22 आदमी हैं। हाँ। जितनी जरूरत पड़ेगी उतने जाएंगे वो। अच्छा, तो क्या ये टनल के अंदर जाएंगे क्या? पाइप के अंदर जाएंगे क्या? हाँ, पाइप के अंदर ही जाएंगे और क्या, कहाँ से लाएंगे? जो स्ट्रेचर भी अंदर जाएगा। तो 4-5 आदमी गए। हाँ, चालू हो गया। अभी सभी लोग आ जाएंगे, सभी लोग सब आ रहे हैं। बस 2-3 घंटे में आपके पास ही मिलेंगे वो। सभी लोग कुशल हैं। टनल के अंदर ये है, क्या तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से? अस्थायी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है और सभी की है। सर एक साफ कीजिए। नौशाद अली, आपने कहा 4 लोग गए हैं अंदर एनडीआरएफ के। हाँ जी, हाँ जी। तो 4 लोगों को बाहर लेके आएंगे वो? हाँ, 4 लोग को लाएंगे, वो तो कंटिन्यू है। बिल्कुल 4 के राउंड में। 4 के राउंड में आपको 2 घंटे में पूरा टीम बाहर आ जाएगा वो। कितना टाइम लगेगा? ये 50 मीटर? ओनली 15 मिनट। ओनली 15। नहीं 15 मिनट लगेगा। 4 लोगों को 15 मिनट। 4 लोगों को 15-20 मिनट लगेगा वहाँ से बाहर लाने के लिए। थोड़ा सा हम समझना चाह रहे हैं कि वो लाएंगे कैसे? आप थोड़ा स्ट्रेचर है जो जिसके ऊपर वो लिटा के लाएंगे, जो एनडीआरएफ के पास होता है। व्हील है उसके ऊपर। ठीक है, लेट जाएंगे एक करके। वो जल्दी से आपको 1-1.5 घंटे नहीं, 2 घंटे में सारे आदमी बाहर आ जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, बाहर आ जाएंगे। ये एक बड़ी खबर जो है, आप खुशखबरी दे रहे हैं। खुशखबरी है, बहुत अच्छी खुशखबरी है। और अभी जो है ना हमारा कंप्लीट हुआ है और वो एनडीआरएफ जो है ना अपना काम करना चालू कर दिया है। अच्छा, आप तो कौन से टीम से हैं? हम जो है ओगर से, हमारा ओगर से हमने पाइप। Okay, viewers, that's the latest that is coming in from one of those NDRF men who is going right in, perhaps the team leader, and he's telling us that contact has been made, and any moment now, the first of the rescued workers will be out. Now, he's also told us that they will be on the stretcher because obviously, viewers, they're going to have to be immediately attended to. At this moment, they're running really on adrenaline, but once they come out, it becomes easier to detect if there is anything wrong with any of them. Let's listen into more reaction. का काम किया है, क्या आप अभी देख कर आ रहे हो? कुछ नहीं, अभी काम हमारा खत्म हो गया। पाइप उस पार टनल के चला गया है। अभी आरडीएफ वाले, ये आर्मी वाले और ये है, इन लोगों ने स्ट्रक्चर डाल दिया। आदमी को सुलाएंगे और खींच के इस पार करेंगे। आर पार अब दिख पा रहा है? हाँ, आर पार दिख पा रहा है। हाँ, दिख पा रहा है। हम लोग अंदर से ही एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जा चुकी है। हाँ, जा चुकी है। पाइप में लाइट लगाई जा चुकी है। हाँ, पाइप में सेफ्टी के लिए लाइट लगा चुकी है। कितने मिनट बाद अब मजदूरों का रेस्क्यू शुरू हो जाएगा? बस 20-25 मिनट के बाद मन निकाला जाएगा। ये कई दिनों का श्रम, परिश्रम, मेहनत, अब लगता है वो थकान दूर होने वाला है और जल्द सभी लोग बाहर आएंगे। हाँ, करेक्ट। एक बार नाम बताइए। परवीन यादव। Praveen Yadav, one of those first responders there, telling us that in the next 20 minutes we're going to have the first of the workers coming out. Viewers, this is very big. This is a big breakthrough in this rescue operation. It was against the tallest odds because if you remember, viewers, we're not cutting through loose soil. We are cutting through rocks, and Anshul is there. Anshul, this has been an operation which has really tested the ingenuity of the NDRF and obviously of the engineers. Anshul, can you hear me? I can hear you. Yes, I can hear you, Rahul. yes, very difficult operation this has been, hasn't it? 17 days. So yes, this was one of the most difficult operations in the history of this country, and now finally we are seeing that the results are bearing the fruits. The hard work that has gone inside for the last 17 days continuously, finally that has been successful. So now Pushkar Singh Dhami has put out a tweet
and in which he is seeing that सिलक्यारा टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिल गई है. पाइप पुशिंग का कार्य मलबे से आर पार हो चुका है. अब श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने की तैयारी शुरू कर दी गई है. So yes, that's the stamp on our information that we got, that the pipe has been drilled through towards the other side, and now finally within the next few minutes we are expecting that the first person would come out. Teams of NDRF and SDRF have started crawling inside the pipe, and within the next few Wonderful. minutes, That's as they reach really, on the other hand, really they will stay. very heartening news. Anshu, stay with me. More reactions coming in from there, from more workers, from more first responders, and I also want to bring in Dr. Bagai right after that. Let's listen in. 7:05 पे एग्जैक्ट पाइप ब्रेक थ्रू हो चुका है. वहाँ पे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर साहबान हाजिर हैं. जनरल वीके सिंह जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट मोर्थ वो वहाँ पे हैं. मोर्थ सेक्रेटरी जैन साहब वहाँ पे हैं. NHIDCL के MD मिस्टर महमूद अहमद वहाँ पे हैं. और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडियन आर्मी के लोग हैं, BRO के लोग हैं, रेस्क्यू एजेंसीज हैं, सारे मजदूर हैं. ये स्टोरी नाउ इट्स डेड. You just heard that gentleman, clearly a senior official, saying that the story in a sense is now over, it's dead. Dr. Bagai, but obviously there will continue to be the monitoring that goes on of the health of these workers. They've been there 17 days and not in easy circumstances, very trying circumstances. What is the first line of examination that will be conducted, number one? And number two, the long-term psychological effects of this also have to be sort of considered, isn't it? Absolutely, Rahul. I think it's in 3 quick parts. The first part is when the first time the patient comes out or the person comes out, the worker comes out, what is his hemodynamic status? So we check for what we call as ABC, that is airway, breathing and circulation. So the patient or the worker has to be hemodynamically stable. His pulse rate and his blood pressure will be monitored, blood sugar will be monitored, and as required shifted to the hospital. Second is shifting to the hospital, what we call as ambulatory care or transport medicine, to keep the patient stabilized so that there is no overt deterioration. And third is the lab tests and the detailed evaluation. So the patients generally would have electrolyte dysfunction, loss of protein and calories, which cause malnutrition. They would have hypothermia, that is critical, especially in the oncoming winter now, and being in isolated confinement for 2.5 weeks. We have to check for physical injury. And last, most importantly, is the rehab is not completed till we look at the mental and the psychological state of these people. They've been alone, even though in a group, without light, without water, without food, for many, many days, with fear, anxiety. Well, let me tell you, Dr. Bagai, let me tell you that the Chief Minister of the state of Uttarakhand has tweeted and he has said that, and he's confirming the news that the breakthrough has taken place and that any moment now, the workers will be removed from their nature-driven forced incarceration for 17 days, viewers, if I can call it that. That's happening, and that is such great news. There has been no casualty, and let's hope and pray that it stays that way. There you can see the Chief Minister with VK Singh, General VK Singh, who's of course the Central MOS, who's also there. There are several other officials right there in that tunnel, and some of them are smiling because this is an important moment, viewers, very important moment in all of this. And one is very, very happy that we don't have an untoward incident that has taken place. Yes, we've had some setbacks, but that is to be expected in a